Hi guys, welcome to OAS Hub. अच्छी आपण मैंने एज आम डेली ये करूँ संडे जाइए आज मंडे तो आज सोशियोलॉजी ऑप्शनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आम डिस्कस करते पेपर 1 आपण मैंने देखिए कि क्वेश्चंस केमी कौ लेवल क्वेश्चंस आसमी आम सब तो सेठू आम जापारे कि क्वेश्चंस जमी आसूँ नॉर्मली इजी क्वेश्चंस but if you attempt in a way like a GS subject, then you will not get good marks. That is the trick. But questions normally easy, predictable, and according to the syllabus. There is nothing that is questions is nothing like that comes out of the syllabus. जो मैंने मो पाखरे मो आवाज वगैरह ऑडिबल अच्छी लेट्स सी ओके ओके गाइस विल स्टार्ट नाउ तो आम देखिलु केमी आम क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ केमी आम लिखिपारू देन ताकू केमी हेल्प करहब माने ओवरऑल ओके विल डिस्कस नाउ सो मेंटरशिप रे आम देखिलु कि केमिति आम क्वेश्चन करि सो एई भलिया मु आगु को तुमर टेस्ट सीरीज अछि 9th नवंबर जो माने टेस्ट सीरीज रे जॉइन करनांती जरूर जॉइन करंतु एवं सोशियोलॉजी रो फाउंडेशन कोर्स रे मो जीएस फाउंड ऑप्शनल पेपर 2 स्टार्ट करी छी जो माने पेपर 2 पई ये अछन से माने जॉइन करि पे एवं पेपर 1 मध्ये या परे हबो तो पेपर 2 रो स्टार्ट करछि सेते फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट फिनिश्ड ऑलमोस्ट नो फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी सरलानी जो माने एबे जॉइन करिवे से माने रेकॉर्डिंग देखि परिवे बट कथा हला कि आपण माने जल्दी जल्दी जॉइन करदु फाउंडेशन कोर्स मध्ये एंड एज वेल एज मेंटरशिप रे आपण टेस्ट सीरीज सहित मु आगे पीवाई क्यू सॉल्व करछि 10 वर्ष पीवाई क्यू सॉल्व करी एबे गुटी 2023 रे ही सॉल्व करूछि आगो को आपण एवरी यूनिट वाइज क्वेश्चन डिस्कस एंड ता सहित वैल्यू एडिशन पाइबे कि आउ कोन करंट अफेयर्स रिलेटेड वैल्यू एडिशन लेटेस्ट करंट अफेयर्स कोन अटैच हिची ता सहित यू विल गेट सो डू जॉइन एंड डेफिनेटली आपन को ये काम रे ओके सो वी हैव डिस्कस दिस सेक्शन ए वी हैव फिनिश्ड सेक्शन ए आपण माने जानि जो 12टा क्वेश्चन आसीबो 12टा रो आपन को 10टा क्वेश्चन देय पड़िबो 10टा * 15 ताकि 150 मार्क रो सेक्शन ए 150 मार्क रो सेक्शन ए परे आगो को देखिबा सेक्शन बी सेक्शन बी रे भी मात्र 100 मार्क रो टोटल 12टा क्वेश्चन ऑल क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड एंड देखो दिस डायरेक्टली लिंक विथ द करंट अफेयर तो समय अनुसार जेते आगो को जाउची कौन सी सब्जेक्ट स्टैटिक सब्जेक्ट सेम हेगी रहू there is a link between current affairs and the static part so this is what is happening so globalization ये हमें लास्ट क्लास में देखे क्या लगे डरखाइम थ्योरी ये भी हमें परहैप्स लास्ट क्लास में देखे देन एक्सप्लेन हाउ दि तीन टा क्वेश्चन हमें इस सेक्शन देखि दबा देन पूरा 2023 रो पीवाईक्यू पूरा डिस्कस
तो आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जानिले देन आपण गोटे कॉन्फिडेंस आसीबो कि भाई मु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करि दैट मीन्स अपकमिंग इयर्स रे मते सॉल्व करि परिबी भल सेही अनुसार आपण भी क्रिटिकली एग्जामिन Durkheim theory of division of ये क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस explain how age race sex are basis of social so part of social stratification ro and ये क्वेश्चंस देखिबा आगु को then there any relationship between religion social change discuss whoever's view on it how have industrialization and urbanization altered the family and marriage times discuss general yes. Then similarly what do you understand by caste because it various characteristics and differentiated with so these are a few now we will discuss how age race sex are the basis तो ये क्वेश्चंस रो तुमको बुझे पड़ियो कि कौन सब्जेक्ट कौन कौन की पॉइंट की कौन दैट सब क्वेश्चंस रे टॉपिक है सोशल तो कौन करिया ये क्वेश्चंस रे तुमको आइडेंटिफाई करिया पड़ियो इज द की subject or the subject of the statement or the key concept कि हमें आइडेंटिफाई तो आइडेंटिफाई कौन कले ना सोशल स्ट्रेटजी देन फाइन fine social stratification fine social stratification then social stratification is referred to hierarchical arrangement equals groups society based on कौन ना चाहे distribution unequal power हो okay ये basic definition of while class and caste are common basis of social class and caste mainly social stratification main basis है कौन class and caste basically stratification concept ही एडू आसी then stratification ascriptive factor such as age ascriptive factor माने जोटा कि समथिंग व्हिच ascribed age हला sex हला race हला ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करे ascription समथिंग इज बाय बर्थ सहित तुमरो ऑलरेडी अटैच्ड है कि थाए एज सहित अटैच है कि थाए लुक वाइज अटैच है कि थाए सेक्स बेसिस अटैच है कि these attributes are biologically determined is biologically काना और एई एज हला एई भलिया डाटा रो एई भलिया सेक्स फीमेल सेक्स तो या थर्ड जेंडर अलगा डाटा रो देन एई भलिया लुक होची लुक वाइज या रेस अनुसार so but society attach social meaning and values to them resulting in the structure inequality resulting in the structured inequality okay so कौन देखिए these attributes are biologically determined and society basically ता सहित meaning attach है जी value resulting in the age basis so one by one हमें देख तो हमें देखो ये क्वेश्चंस रो जेतले हमें इंट्रोडक्शन देले हमें देले कि रियल बेसिकली बेसिस या नॉर्मल बेसिस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन कौन ना हमर कास्ट एंड क्लास बट अपार्ट फ्रॉम क्लास एंड कास्ट देयर इज ए एस्क्रिप्टिव फैक्टर दैट इज एज हो एक्स हो एंड ये भी मध्य करे এবং या पछर मेन रीजन कोन ना बायोलॉजी ओके बायोलॉजी बेसिकली तुमे सेथर अटैच हो या वैल्यू हो या ऊपर एज एज ए फर्स्ट देखिए स्ट्रैटिफिकेशन एज स्ट्रैटिफिकेशन कौन व्हाट डू यू मीन बाय एज स्ट्रैटिफिकेशन एज स्ट्रैटिफिकेशन refers to the unequal status refers to unequal distribution status roles and privileges among the people belongs to the different age group unequal distribution status roles and privileges the people belongs to the different जरा नहीं मैं बुझी जाओ भल से माने तुम एज अनुसार स्टाटस तुम्हें गोटे एडल्ट अच्छ तुम्हें बिफोर एडल्ट चाहे चाइल्ड अच्छ 10 ईयर छोट 10 वर्ष छोट पिला
देन तुम्हें 15 वर्ष पिला माने तुम एज अनुसार तुम स्टेटस डिफाइन एज अनुसार तुम रोल डिसाइड हुए एज अनुसार तुमको प्रिविलेजेस राइट और रॉन्ग तो देखिबा ट्रेडिशनल सोसाइटी देखियो ओल्डर पीपल आर रिवर्ड फॉर द विजडम कैन दे हैव विजडम कंसीडर करा जाए एंड ऑक्युपाई पोजीशंस ऑफ ऑथोरिटी एग्जांपल ट्राइबल एल्डर्स एंड फैमिली हेड्स बेसिकली से अथॉरिटी हैंड कर फैमिली भी एबे भी आम फैमिली पर जो माने एजेड माने से माने घर रो हेल्प में रुहंती घर को कंट्रोल कर अथॉरिटी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी सर वैल्यूड प्रोडक्टिविटी कहीं यूथ पैसा इनकम कर प्रोडक्टिविटी इनकम स्किल यूथ आर वैल्यूड फॉर प्रोडक्टिविटी innovation and technological skill leading to declining status of the elderly right leading to declining status of the elderly so elderly रो जेतले बर्तन धीरे धीरे status decline होबाक लागिलानी काई ना इंपोर्टेंस कहार बढ़िलानी ना youth because of their skill because of their productivity because of their innovation is going on then ageism discrimination based on age creates social disadvantage for both very young and elderly okay age basis बेसिकली तुम्हें कहा पर कहार प्रॉफिट अच्छी ये कहा पर प्रॉफिट रखी पारुछि राइट ये बुझीगल एजेस फॉर द बेसिस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन एज तो यार गोटे जब एग्जांपल दबा लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर रिटायरमेंट कांस्टेंट यार एग्जांपल दबा एजिजिम ऊपर बेस्ड ऑन द एज कि जॉब अपॉर्चुनिटी मिलिबो फॉर ओल्डर वर्कर ताको पई मिलेनी जॉब मार्जिनलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन ओपिनियन इन डिसीजन घर तुम्हें देखिबो तुम्हें भाबुथबो कि तुम जा भाबुछ बट तुम कथा सुनिकी ओके ओके you carry on your study we are taking decision so your opinion your decision basically hardly matters social view देखिबा कोन ना फंक्शनली लाइक कालकट पर्सन कहिथिले वेरी इंपोर्टेंट देखो ए एपर्यंत लिखि देलो जानि थिबो या ऊपर कैन ट्रेडिशनल सोसाइटी हो मॉडर्न सोसाइटी हो एजीजी जो एज बेसिस ऊपर देख बट मैं सोशल जो पॉइंट जे एटा को मेंशन करते बहुत Talcott person he called age rules as a necessary for society age अनुसारे जी जन रूल तर फंक्शन करिवा जे फंक्शनली के अछंती एज ए नेसेसरी स्टेबिलिटी while conflict theory see age certification form of power in it पहला मेनली सोशियोलॉजिस्ट रो दी जण अछंती गुटेला फंक्शनलिस्ट आ गुटेला कॉन्फ्लिक्ट आ गुटेला मिडिल पाथ जे की वेबर वगैरह वेबर ग्रुप so conflict theorist basically call age certificate a form of power getting or not is basically age basis of certificate then race the basis of certificate देखो केमती सिस्टमैटिक हुए तीनटा पचारि एज रेस एंड आम वन बाय वन रेशियल stratification is a hierarchical arrangement based on perceived and genetic perceived and genetic obviously से अनुसार देखियो नॉर्मली जो देखिबा यार आउ टिके डीपर जे रेसटा बेसिकली जेमिति तुमे इंडिया रे आमे इंडिपेंडेंस लड़ी थिलु आमे थिल ब्रिटिशर्स भाबुथांती से हायर रेस okay and they are believe that we are the basically white man's burden white man's mean britishers they are white they are very close to the god okay so tankar burden ame thau so सेइथि पे से माने जस्टिफाई करथांती एक्सप्लोइट so race has historically been used to justify exploit it create dominant and subordinate group leading to unequal access to education employment and political concept of race socially constructed concept of race is socially constructed yet produce a real consequences the people lives it produces real consequences the so the concept of race
कौन ना सोशियली कंस्ट्रक्ट टेस्टा सोसाइटी देखला ये वाला देखा होची सी गोटे बेसिकली इमेज क्रिएट कॉन्सिक्वेंसेस कला एवं से अनुसार लाइफ ही डिसाइड करा जाए तो लाइफ भी से अनुसार डिसाइड करा जाए देन एग्जांपल apartheid in South Africa apartheid in South Africa institutionalized racial hierarchy institutionalized racial hierarchy racial segregation in USA under the Jim Crow laws marginalized African marginalized so जदि एग्जांपल अफ्रीका रे सही है अफ्रीका रे जो फुड डिस्क्रिमिनेशन हेची apartheid जो टेकी कांसेप्ट आस्तिला से कि रेशियल हायरार्की सेठी ब्रिटिशर्स रूल करथिले गांधीजी जाइए सेठी फेस करथिले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूएस रे मध्य जिम क्रो लॉज ये अफ्रीकन अमेरिकन बेसिकली मार्जिनलाइज करा जाए कि ब्लैक तो सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखिबा WEB OAS analyze racial inequality as rooted in economy exploitation ideology conflict theory कहले कि how dominant racial group maintain power yes এটা be true এটা আগে true racial inequality is rooted in the economy exploitation ideology okay WEB OAS okay तो sex the basis of stratification आमे देखिले एज देखिले आमे देखिले रेस देखिले बर्तमान तुम्हें जानी जेंडर स्ट्राटिफिकेशन या सेक्स या जेंडर स्ट्राटिफिकेशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ sources power and men and women and access to gender identity even if today men अधिका सैलरी पाउछन सेम काम पई so that is why we are discussing most society are patriarchal in society granting men higher status and authority in the political economic and environment sphere so obviously तुम्हें जानी men often face occupational segregation men often face occupational segregation age gaps and limited access to leadership position limited access to leadership position gender norms and stereotypes reinforce inequalities through socialization and cultural practices gender norms and stereotype reinforce inequality through so ये भी देखिए तुम्हें so गोटे कौन वुमेन रे काम रे ऑक्युपेशन सेग्रीगेशन थाए वेज गैप थाए सैलरी भी से अनुसार गैप थाए एवं लीडरशिप पोजीशन को ताको नॉर्मली दिया जाए नहीं वेरी फ्यू एरिया जोंडे कि लीडरशिप आ गोटे कौन स्टेरियोटाइपिकल मेंटालिटी जो ऑलरेडी फिक्स्ड ही थाए कि ये इनइक्वालिटी अच्छी ड्यू टू फिजिकल बैरियर and socialization hoba cultural practice exam underrepresented in politics very important point gender based violence on friends in the part of southeast I mean india re bhi core of preference so feminist theories such as a for and an Oakley argue that gender inequality is socially constructed, sustained through patriarchal institutions. बोले इनिशियली जेंडर इनइक्वालिटी कौन है सोशली बनागला इनइक्वालिटी एवं सेटा कंटिन्यू ही चलची बिकज ऑफ पेट्रियार्क वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट देखो मु जो सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट दबार रीजन कौन कि तुम्हें जस्टिफाई कर लो तुम्हें जहाँ लिखिल ताकू जस्टिफाई कर लो एवं यू आर बेसिकली जे सोशियोलॉजिस्ट हिसाब रे तुम्हें ये मार्क तुमरो ये गोटे दीटा पॉइंट जो ऐड होउची सेइथिरे गोटे दी मार्क तुम एक्स्ट्रा पाइबो एंड इमेजिन सब क्वेश्चन रे गोटे दी मार्क एक्स्ट्रा पाइले केते मार्क गोटे पेपर रे एनहांस ओके so race age sex are ascriptive biases of the certification that shape individual life chances social mobility and these forms of inequality persist across the culture historical period though their manifestation vary so modern democratic society चाहूँ कि भाई inequality reduce हो
through affirmative action, legal reform, or social awareness, but deep-seated basis continue practice. So तुमे पॉजिटिव वे रे छाड़िल पॉजिटिव वे रे छाड़ल एवं दैट टू आमे ऑलरेडी एक्सेप्ट कले कि ये अच्छी बट ता पय रिक्वायर अच्छी सो केमिति बैलेंस वे रे आमे करिवु दीज आर द प्रैक्टिस and practice will give you will not come by watching this video not able to replicate in exam. By watching this video you inculcate in your mind and practice again and again to reflect in your examination, reflect in your answer. So the number of times you will practice, the number of hours you will practice, the number of questions you will practice will reflect definitely in your examination and reflect in your so that's you need to follow. So is there any relationship between religion and social change? Discuss Weber's religion has always played a significant role. Religion play so ethi kon actually religion and social change a oda topic main topic and Weber review. So religion plays a significant role in shaping it. It influences people's values, behaviors, and instincts. The relationship between religion and social change, the relation religion and social change has been a key concern in okay जे जहार डाउट अच्छी लेट मी नो जहार जतरे जो ये डाउट अच्छे तो कोना करा गला ना रिलीजन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करी ओके कोन पई ना ह्यूमन सोसाइटी को सेव करिया पई लोकन वैल्यूज बिहेवियर एंड so relationship between religion and social change has been by thinkers like Karl Marx how saw religion as a force control. Max Weber viewed it as a potential driver of the social. Max Weber कहले कौन ना potential driver of the getting or not. So religion and social change. So इटा main हमर ये concept ये question. एवं तार सबुथिरे रहिबे किए मूलरे Max Weber. So religion can promote and resist. Promote करी परिबो and कौन it can promote change by transforming values एमती प्रोटेस्टेंट religion जो प्रोटेस्टेंट माने आसले रिफॉर्म करिया चाहिए then it can resist change कौन by upholding the tradition हमर अछि ताको आमे चेंज जेमिति हमर मंदिर भीतर पसिया दोनु ते मेल तुमरो तारे अनंकु खास करके द एज ग्रुप ऑफ एज ग्रुप then similarly सनी सिग्नापुर तुमरो महाराष्ट्र रे भी सेमती थिला बेसिकली ता एग्नेस्ट चाहूची ट्रेडिशन को एमान को प्रकार हायरार्की मेंटेन करिया पई करंती मोरल नॉर्म्स को गुडे थाए जोंडे चेंज करंती ना thus religion not only merely conservative force but it also act as a revolutionary or reformative agent like protestant and six केमिति सब कहार जते डाउट थिबो लेट मी नो से जणाओ समस्ते कि कहार असुविधा अछि এবং তোমার যে সোশিयोलॉजी ऑप्शनल तुम सांग साथी लेट एवर ऑफ इट तो सोशियोलॉजी रो पूरा बेस्ट मार्क केते रखी हेबो केमिति रखी हेबो आमे ट्राई करिवा आपण माने समझ कि ट्राई करिवा कि भाई मैक्सिमाइज करिवा तो सोशियोलॉजी मेंटरशिप रे मात्र मु 50 जन पिलां को नउची सो दैट आमे तांको गाइड करियो बेसी पहले गाइड करियो मैक्स 50 एंड ऑलरेडी 15 पाखा पाखी नै सालेनी आर अछि नहीं जानते एवं फाउंडेशन को ऑफलाइन रे 15 जन ऑलरेडी हेलेनी सो आउ मात्र मु 15 जन नेबी मैं ऑफलाइन रे 30 ऑनलाइन रे 10 जन नै सालेनी दैट इज मेजर ये सो आपण माने जो माने करिना ए सब चैनल आपण नंबर पाई जिवे तो से अनुसार स्टार्ट कले रियली सीरियस अछंती सोशल ऑप्शनल 10 तो आपण जे भी ऑलरेडी पढ़ी चंती तांको भी मु कहबी कि
भल से पढ़ु फंडामेंटली क्लीयर हूँ वेरी नॉमिनल प्राइस रे आपण Weber's view on religion and social. Weber view on religion and Weber explored the connection between religion and social. Most notable work, the Protestant ethic and the peace. Very important. Very important. Ethics and the spirit of capitalism. Protestant ethics कौन कहूची? What is Protestant ethics? इधर वेबर कौन कहले? The rise of modern capitalism ईस्टर्न यूरोप खास करके के इन्फ्लुएंस सर्टेन रिलीजियस आइडिया कहार प्रोटेस्टेंट कह सर एमाने किए एमाने बेसिकली जो माने चर्च को अपोज कर डोमिनेशन ऑफ चर्च यूरोप रे पूरा कंटिन्यूअसली पाखापाखि 1000-1500 वर्ष थिला तापरे एमाने आसिले कि ताकू प्रोटेस्ट कर जो माने प्रोटेस्ट कले डोमिनेशन ऑफ चर्च को से माने को कहगला प्रोटेस्टेंटिज्म एवं सेही कांसेप्ट ऑफ काल्वान देथिले जॉन काल्वान सेही पई काल्वानिज्म में मध्य कहा जाए तो काल्वानिस्ट कहती कौन काल्वानिस्ट सेही कांसेप्ट गोटे पार्ट है काल्वानिस्ट एवं काल्वानिस्ट थियोरी को फॉलो करिसेंती किए मैक्स वेबर तो जॉन काल्वान काल्वानिज्म कहा जाए तो काल्वानिस्ट डॉक्ट्राइन सो काल्वान को डॉक्ट्राइन कौन तांकर सिद्धांत कौन ना प्रीडेस्टिनेशन डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन बिलीव दैट साल्वेशन इज डिटरमिन्ड ओके साल्वेशन ऑलरेडी फिक्स ହେଇକି ଅଛି calling the idea that hard work the idea that hard work the idea that hard work and success in one's vacation are a sign of God's favor. So basically hard work को promote कले so Protestant ethic क्या hard work and success in one's vacation are a sign of God's hard work कले एमती आमे को कष्ट कले कृष्ण मिलबे आपण माने प्रिपरेशन कष्ट करी कले डेफिनेटली believes encouraged believe encourage people work daily and save money and reinvest their earning जो ये जो बिलीव गुड़ा पीपल को हेल्प करिवो काम करिया पे प्रोटेस्टेंट मानकर काम एंड मनी बंचेबे देन रिवाइव करिवे देन अर्निंग गेटिंग व्हाट वेबर कॉल्ड द स्पिरिट thus religious value helped bring about a major and social चेंज करि पाला नहीं तो सही कथा तो क्वेश्चंस थिला कि भाई रिलीजन तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म रो कौन सी वेबर व्यू कौन वेबर व्यू कथा ही आमे डिस्कस वेबर वैल्यू रिलीजन गिव मीनिंग टू लाइफ कहले वेबर लाइफ को मीनिंग दउछ लेजिटिमाइजेस सोशल ऑर्डर ऑब्वियसली सोशल ऑर्डर को लेजिटिमाइज करूछ के the religious ideas can provide moral motivation for social action influencing economic political and cultural institutions influencing economic political तो रिलीजियस कौन कला वेबर अनुसार कि गोटे मीनिंग दउची लाइफ को जे लेजिटिमाइज करूची ऑर्डर को जो माने लेजिटिमाइजेशन एका बुझी पार नथिबे टिके फंडामेंटल क्लासेस रे मु बुझाई छी तो रिलीजियस आइडिया कैन प्रोवाइड मोरल मोटिव फॉर सोशल ओके and influencing economy and political and cultural comparative study of world religion. Weber extended his analysis beyond Hinduism and Buddhism. Hinduism and Buddhism. सी कहले केवल क्रिश्चियनिटी ऊपर नु वर्ल्ड रिलीजन को स्टडी कर इंडिया रे he argued that the emphasis on karma moksha and other worldliness discouraged economy rationalism and modern karma moksha and other worldliness then confucianism China रे it stays on tradition family royalty and social harmony limited the development of capitalist so नहीं बोली कोई
So from the comparison, Weber concluded that religion ethics profoundly shape the social and economy organization माने so यहाँ critical evaluation देखिवा Weber highlighted the cultural and ideology which Karl Marx economic determinism एटा Weber टिके deeper जाइछन्ती so Weber cultural and ideological factor भी consider करछन्ती but Karl Marx केवल economic. His work showed that values and beliefs can be powerful agent of values and beliefs powerful agent of the तो ये तुमको critics argue Weber overemphasis religion जो social change and ignore other factors like political institution technology. Okay, empirical study show that capitalism also develop in non-protest. Weber कौन कहले कि कैपिटलिज्म कोठी बढ़ी जोटी प्रोटेस्टेंट अच्छा बट नॉन प्रोटेस्टेंट कैपिटलिज्म जेमिति तुमर चाइना रे तो मार्क्स बिलीव वेबर अंडरएस्टिमेट मटेरियल बेसिस पर मटेरियल जो इकोनॉमी फैक्टर को अंडरएस्टिमेट Weber demonstrate that religion is not merely a reflection but an active and dependent force capable of social and economic. His analysis of Protestant ethics provided profound understanding how religious ideas can influence with religion, with religion often serving as a catalyst transform in how have तो बुझी होची समझते बुझी पारुछ तो how have industrialization केमिति industrialization and urbanization altered the marriage system discuss in general yes that almost straightforward questions जोंटे कि एबे चालीची industrialization urbanization are among the most significant social they have transformed economic structure lifestyle social institutions particularly family and marriage which form the core of human society. The change have been realized by sociologists such as Emile Durkheim, Talcott Parson, and William Goddard. Here, तो कौन करिसेंती अर्बानाइजेशन जो स्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट and social institution of family and marriage is a very important part and जेटा कि ह्यूमन लाइफ रो सबटु को तो ये चेंजेस दरखाई भी देखी चंती ये चेंजेस टालकट पार्सन impact of industrialization or first hela kono na shift from the joint family to nuclear we have discussed all these things pre-industrial society joint and extended the norm due to agriculture and invest economy then धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हैला मोबिलिटी हैस लोके मूव करले बाहर को गले न्यूक्लियर फैमिली हैला स्मॉलर फैमिली हैला इंडिपेंडेंट यूनिट सेंटर्ड अराउंड द पेरेंट्स एंड लगे then next हैला कोन तुमरो change in family function earlier the family was multifunction economic education and recreation in industrial society many of these functions have been taken over by specialized institutions example school hospitals and okay change in family function आगु कौन होता ना फैमिली फैमिली भीतर सब गोटा काम होता है एजुकेशन अदर रिक्रिएशनल मस्ती जहाँ हो इंडस्ट्रियल सोसाइटी रे कौन है स्पेशलाइज स्कूल है भल स्कूल हॉस्पिटल फैक्ट्री टेक्न देन मॉडर्न फैमिली कौन इज नाउ मोर फोकस्ड ऑन इमोशनल एंड प्रोडक्टिव ओके सो ये थिला देन इकोनॉमी इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट हैला इंडिविजुअल इकोनॉमी इंडिपेंडेंट हैला मैन हैला स्पेशल इकोनॉमिक रिड्यूसिंग इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंस विद इन द फैमिली तापर कोन हैला मोर इगैलिटेरियन रिलेशनशिप मोर
urban life reduces dependency in net तो रिलेशनशिप जो थिला किन रिलेटिव्स मानक भितर से नेटवर्क धीरे धीरे खत्म एंड ट्रेडिशनल किन नेटवर्क्स एंड ट्रेडिशनल अथॉरिटी social relation become more individualistic and contractual rather than a script based on birth nu individualistic ହେଇଗଲାଣି contractual basis ର ହେଇଗଲାଣି social relations and decline in the family authority patriarchal control of elders धीरे धीरे कमिलाଣି and men ର डिसीजन मेकिंग जोंडे कि बर्तन हजबाई भीतर देन के मध्य impact on marriage system urbanization has increased social interaction leading to rise in love marriage or self choice urbanization has increased social interaction obviously देखियो तो राइज इन लव मैरिज धीरे धीरे हेलानी चॉइस हेलानी निजे चॉइस करी मैरिज करिवा डिलेड इन द मैरिज एज ये भी देखा गला एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैव रिजल्ट इन लेट मैरिज often prioritize career and personal increase divorce and separation greater emphasis on individual happiness and compatibility led to the higher rates of divorce separation and remarriages any society higher rates of divorce separation and remarriage then changing gender rules women's education and employment challenged traditional gender rules husbands and wives increasingly share household and child care responsibility share करिया लागिलेनी that's right or wrong चेंजिंग जेंडर रूल भी मतलब चेंज हेलानी लीगल एंड सर देखो ये पॉइंट गुडा तुमको इंपोर्टेंट फर्स्ट कहली फैमिली उपरे पांचटा पॉइंट कहली बाय जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली फैमिली फंक्शंस हैला चेंज द फैमिली इकोनॉमी इंडिपेंडेंस हैला देन वीकेनिंग द टाइज डिक्लाइन इन द फैमिली सब लिखि दबो मैरिज सिस्टम रे लव मैरिज बढ़िलानी धीरे धीरे डिले इन मैरिज एज बर्थ रेट एंड सेपरेट बढ़िलानी जेंडर रूल्स बढ़िलानी लीगल एंड कल्चरल रिफॉर्म्स हैलानी the laws for supporting intercaste marriages inter-religious marriages same-sex marriage that changing in social attitude modern urban society the rise in alternative family form truth of single parent family live in relationship and child free marriages बहुत सारा मैरिज अच्छी चाइल्ड ना ही child free marriages shows a greater diversity and flexibility in the family general trend in modern family and marriages smaller family size and fewer children emotional companionship replacing traditional duty bound weekend social control for marriage and family okay so increase acceptance of diversity in the family structure diversity so modern family and marriages smaller family size fewer children emotional companionship replacing traditional duty bound relations weekend social control over marriage and family decisions increase acceptance of diversity in family structure so conclusion देखिए industrialization and urbanization have transformed the structure function values of the family while these processes have promoted individual freedom gender equality and emotional they have also led to challenges such as weekend ties stability in marital relationship declining social in essence the modern family and marriage system are more flexible modern family and marriage flexible dynamic and individual reflecting the changing character of the contemporary what do you understand by caste what do you understand by caste and discuss last question discuss its various characteristics and different class ये पेपर 1 रे भी अछि पेपर 2 रे भी अछि तुमे दीटा को देखि परिबे दिस इज आल्सो वेरी इजी वन caste system is one of the most of the Indian it is a hereditary endogamous social stratification that divides people into hierarchical group based on birth based on ritual purity very important definition
concept of caste has been deeply embedded in the Hindu and has influenced social relations, marriage, and कौन इन्फ्लुएंस करछि सोशल रिलेशन मैरिज को एंड मोबिलिटी the endogamous is a hereditary social stratification system. So caste ର definition हवर्ट रेजली किछि घरे सब या को जानिया दरकार caste may be defined as a collection of family or group sharing a common name claiming common and following the same occupation regardless of the those who are competent to give an opinion as in forming social homogeneity के thinkers definition include then GS Gray defined caste as a system with hereditary ହେଇଥିବା ଦରକାର 6 essential hereditary ହେଇଥିବା ଦରକାର membership ହେଇଥିବା ଦରକାର endogamy ହେଇଥିବା ଦରକାର hierarchy on interaction traditional occupation and social segregation. Okay, so जन दी जन theory then characteristic of caste system hereditary membership. Okay, person caste by birth हुए hierarchy जोन की hierarchy order brahmin at the top and untouchables जोन की dalit at the bottom then endogamy जोन की same caste भीतर intercaste marriages normally encourage करा जाए सॉरी encourage करा जाए and caste within the caste marriage occupation based on division that is caste tradition is occupation that is priest je brahmin warrior kshatriya trader vaishya and laborer shudra social and religious restriction થાય on the food sharing how social interaction how social participation caste mainly purity and pollution norms based social segregation कौन lower caste faces social exclusion and discrimination particularly in traditional caste पंचायत एंड सोशल कंट्रोल सो ये सब देखो केमती कास्ट भीतर तार फीचर कैरेक्टरिस्टिक फीचर caste organization traditionally enforce rules customs and ये सब caste and class okay ये ascribe status ये achieve status determine education occupation natural rigid and hereditary ये flexible class social mobility closed system mobility नहीं open system mobility अच्छी endogamous within the caste interclass marriages socially accepted occupation traditionally by birth or change according to skill and opportunity hierarchy based on religious purity and belief based on economic setup social interaction very कम limited थाए strong caste taboo थाए relatively free एठी किछि न थाए taboo वगैरह न थाए social cost control है maintained by custom religion and caste पंचायत maintained by laws economic power and class norms तो ये सब ट्रेडिशनल सोसाइटी हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये हला ସେଥିରେ ମଡର୍ନ ସୋସାଇଟିରେ ପିପୁଲ ଆର୍ ଗ୍ରୁପଡ ଇନଟୁ ଅପର କ୍ଲାସ୍ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଇନକମ୍ ବେସିସ୍ ଚେଞ୍ଜେବିଲିଟି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ବହୁତ କମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିହେବ ଏଠି ଡାଇନାମିକ୍ କିଏ ଚେଞ୍ଜ କରିହେବ ଏ ସବୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିଦେଲ ତ କାଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ହେରିଡିଟାରୀ ଆଣ୍ଡ ହାଇରାର୍କିକାଲ stratification deeply rooted in Indian tradition while class is a modern economic. However, with modernization, education, urbanization, caste distinction are globally diminished and class-based differentiation is emerging as a form of social stratification in okay so you can write this type of question so guys sociology foundation courses रे पूरा बेसिक फंडामेंटल सब पाई जिवे एंड मेंटरशिप रे मेंस जो माने थरे पढी चंती तांको पई ये काम रे आसीबो जो माने मेंस दउचंती या न दउचंती जॉइन करि पारे वेरी लिमिटेड प्राइस रे वेल कंस्ट्रक्टेड मेथड रे आपण सेइथरे मेंटरशिप रे टेस्ट सीरीज इनक्लूड खाली टेस्ट सीरीज नै परियो 4000 बाकी दीटा नेले मतलब 7000 रे हिजो लाइव क्लासेस सब पीवाईक्यू डिस्कशन वैल्यू एडिशन टेस्ट सीरीज रहिबो देन मेंटरशिप तो आपण एवरीथिंग ये सब ये भी इनक्लूड हम फाउंडेशन बेच मेंटरशिप यार भीतर सब अच्छी ये केवल मेंटरशिप सिलेबस पूरा डिटेल्स रे पढ़ा जीवनी बट यूनिट वाइज मु पीवाईक्यू डिस्कस करी वैल्यू एडिशन पढ़ी थी जदि काम देन केस पई आपण माने टेस्ट सीरीज जॉइन करि परिबे एंड बोथ टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप जॉइन करि परिबे तो बहुत ही भलो हमर क्वेश्चंस हमर बहुत सारा क्वेश्चंस आसी लास्ट ईयर भी
आपण माने जॉइन कले आपण रियलाइज करिवे. सो फॉर दैट यू कैन कॉल दिस नंबर और रजिस्टर दिस नंबर. दिस थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय जगन्नाथ.